Welcome to Broadly 80. I'm Rohini and you are watching me on your screen with new writing task 2 session. Previously, we have discussed some of the important steps and techniques in which we have performed writing task 1. That session was completely based about the task 1 session, specifically data representation, in which we have performed some of the important type of tasks like bar graph, line graph, linear, and tabular. But here today, I'm going to talk about writing task 2. So let's start with it. In today's session, mainly we have to talk, we will perform and we will discuss some of the important strategies, structure of tasks, what type question types, and one question of task 2. So let's start with it. Good afternoon, Serene. Can you hear me? Serene, you can unmute your mic so that I can hear you. Yes. Serene, आवाज आ रही है आपको मेरी? Okay, Serene, you can see writing task 2. Okay. Basically, there in IELTS, there are 4 modules. It's listening, reading, writing, and speaking. And the third important module of IELTS is writing. Writing has 2 tasks, task 1 and task 2. Okay. Task 1 is about data representation and description of any process, any map, fine. So उसका एक अलग से structure होता है task 1 का. But if we talk about task 2, तो वो पूरी तरह से अलग है. In task 1, you are not required to write anything from your own. आपको खुद से कभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, because they will give you a piece of paper in which you can see a task जिसमें डाटा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या वो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. बट टास्क 2 में दे गिव यू अ टॉपिक in which you have to write at least 250 words. 250 words are the minimum requirement in task 2. Okay? Is it clear to you, Sarveen? अब इसका एक स्ट्रक्चर है. आप जब भी राइटिंग परफॉर्म करेंगे, there are some specific type of question you may have in your exam. Okay? अब यहाँ देखिए, you can see the first, सबसे पहले थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन करते हैं about writing task 2, then after we will discuss structure. Okay? कि structure क्या है, paragraphs कैसे बनाने हैं, and along with that, one question of writing task 2, including vocabulary words. Fine. So the first writing task 2 session, let's start with it. As I have already told you, your writing consists at least 250 words. It's a minimum requirement. Okay, आपकी जो length है वो 250 से ज़्यादा होनी चाहिए. And you will be presented with a topic and will be tested on your ability. That means आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट होगा, आपको उसके बेसिस पे टेस्टेड किया जाएगा. आपकी एबिलिटी को उस क्वेश्चन के बेस पे चेक किया जाएगा. फाइन. उसमें आपको कुछ चीजें होंगी जो आपने परफॉर्म करनी है. आप यहाँ देख सकती हैं, justifying an opinion. Maybe they ask you justification of question. Maybe आपका जो question है, it would be based on opinions. Fine. Thereafter, they may give you a journal description or journal situation, जिसके ऊपर आपको situation ही discuss करने को बोल सकते हैं. They may ask you to summarize a detail of specific problem. For example, environmental issues के ऊपर कोई topic आया है आपको. Fine. They can ask you, हम एक example ले लेते हैं question की. Nowadays, environment has become a serious matter of concern in all over the world. What are the problem of it and how it can be solved? Okay, so this can be your question in exam. तो वहाँ पे आपको बताना है problem. What are the problems? Why environment is become so big issue? And then identify the possible solution. What can be or what could be the possible solution to solve or to tackle with the environment issues, and supporting what right with the reason. Maybe हो सकता है किसी चीज का reason पूछा है आपसे,
आर्ग्यूमेंट्स पूछा है, देयर मे बी टू डिफरेंट ओपिनियन ऑफ पीपल, उसके बीच में आर्ग्यूमेंट है, तो इस तरह से आपको अलग अलग सिचुएशन आएगी. दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, क्लियर टू यू Saveen? Then after, okay, यहाँ आप लास्ट लाइन देख रहे हो, argument and a relevant example from your own knowledge and experience. Now make sure of it. If you want to get 7 above, then it is very important to give some logical examples. Examples can be of two types: hypothetical example and real life based examples. Hypothetical example means those examples, such examples that are based on सर्वे, किसी चीज की सर्वे या किसी चीज के कंडक्ट करवाए गए सर्वे के ऊपर बेस्ड है. एंड इफ वी टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल, दैट मींस द थिंग्स दैट हैपन इन अ रियल लाइफ, कुछ ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में हुई हैं, दैट एग्जिस्ट इन अ रियलिटी. फाइन. सो इस तरह की आप एग्जांपल्स को लिंक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ. इफ योर टारगेट इज टू गेट more than 7, it makes your task more impressive in front of examiner. If you are giving a relevant examples, then it shows that you are clear with the idea. Even it represents a good way of conveying information to your examiner. Okay. उसके बाद आगे देखिए, राइटिंग स्क्रिप्ट्स आर मार्क्ड बाय ट्रेन एंड सर्टिफाइड आईएलटीएस ट्रेनर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका आईएलटीएस का पेपर चेक कौन करेगा. फाइन. मेनली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को हमारा पेपर चेक हो रहा है. सो हु इज गोइंग टू चेक और हु इज गोइंग टू assess us? So there will be the trained and the certified IELTS examiners who all hold relevant teaching qualification and are recruited as an examiner by the test centers and approved by British Council or IDP IELTS Australia. So that means the person who is going to assess your writing paper, he or she will be a trained and recruited examiner under the ISOL Cambridge partners of British Council and IDP. फाइन. तो वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, सर्टिफाइड एग्जामिनर्स होते हैं ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी आईएलटीएस ऑस्ट्रेलिया के अंदर. फाइन. Now come to the type of question. As I have told you, there are some specific type of questions. इन्हीं में से कोई एक question आपको एग्जाम में पूछा जाता है. So the question type, the first question type you can see on your screen. Do you agree or disagree? सबसे पहला क्वेश्चन जो है Saveen, this is about agreement and disagreement. So when it comes to about agreement and disagreement, that means it's opinionatic. Okay, तो यहाँ पे आपने अपना opinion बताना है. They give you a situation, any situation on a particular topic. It may be on it may be on traveling, it may be on technology, communication, it may be based on education, it can be based on advertisement, environment. तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको एक सिचुएशन देंगे एंड देन दे मे आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू एग्री और डिसएग्री. सो इन दिस टाइप क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपका फॉर्मेट रहता है, यू नीड टू राइट टोटल 4 पैराग्राफ्स ओनली. Fine. If you are sitting there with pen, pencil, and notebook, then you can note down these key points, or you can jot down these main elements on your paper. That in the first type of question, do you agree and disagree? As such, there is no need to get worried. After this session, I will send this PDF file to you, ताकि आप उसको घर पे बैठ के बाद में दोबारा से पढ़ भी सकते हैं. But still, अभी अपने माइंड में पॉइंट्स को रखने के लिए you can jot down the key points. Okay, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए आप अपने पेपर पे, ताकि आपके माइंड में रहे thought out this session. Okay, so the first, जी, do you agree or disagree? So that means आपको one side जाना है. एक चीज का ध्यान रखिए, when or comes, so that means या agree या disagree. तो हम दोनों को सपोर्ट नहीं करते. So we need to answer, we need to give a one-sided answer. या तो पूरी तरह से agreement की तरफ जाओ या पूरी तरह से disagreement की तरफ जाओ. So in the first type of question, हमने बनाने हैं only 4 paragraphs. वो 4 paragraphs कौन से होंगे? We will discuss it later. Then in the second question, अब देखो question में चीजें almost same है. यहाँ है do you agree or disagree? Here they ask you to what extent do you agree or disagree. Fine. Basically,
क्वेश्चन पैटर्न एग्री और डिसएग्री का ही है, बट एक्सटेंट इज देयर. इन द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज नो एक्सटेंट, मतलब लिमिट नहीं पूछी कि आप किस हद तक अग्री करते हैं, किस हद तक डिसएग्री करते हैं. So when it comes to extent, so you have two alternative options. First में कोई option नहीं है, you have to give a 100% one-sided view, one-sided opinion. But in second type of question, you have two alternative. You have one another option. That means one alternative. The first choice you have, आप पूरी तरह से 100% के साथ जा सकते हैं, ठीक है. आपका जो एक्सटेंट है, जो लिमिट है एग्रीमेंट का और डिसएग्रीमेंट का, इट कैन बी 100% और अदरवाइज इट कैन बी your opinion can be more towards agreement or it can be more towards disagreement. किसी एक तरफ ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे हम proportion डिवाइड कर लेते हैं. वो proportion क्या है? That is 70-30. Suppose if you are saying, let's take another example. हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. Some people think that technology has more positive effect nowadays as compared to the negative side. To what extent do you agree or disagree? Okay, क्वेश्चन में पूछा है कि कुछ लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ज्यादा लोगों को वो पॉजिटिव साइड्स उनको मिलता है एज कंपेयर टू नेगेटिव. तो आप किस हद तक एग्री करते हैं और आप किस हद तक डिसएग्री करते हैं. सो सपोज आप मानते हैं कि डेफिनेटली एडवांटेजेस आर मोर, फायदे ज्यादा ही है टेक्नोलॉजी के, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिन्हें कंसिडर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दोज डिसएडवांटेजेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. फाइन, अनअवॉइडेबल है जो. सो हमने क्या किया, वी आर मोर इंक्लाइन, हम ज्यादा इंक्लाइन थे, तो हमने अपने एग्रीमेंट को भी सपोर्ट करना है एंड हमने 30% प्रोपोर्शन के साथ अपने डिसएग्रीमेंट को भी सपोर्ट करना है. सो व्हेन इट कम्स अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आपके पास दो ओपिनियन, दो ऑप्शन है. या तो पूरी तरह से वन साइडेड एग्री या डिसएग्री चले जाओ, ठीक है. दैट मीन्स अगर आप पूरी तरह से एग्री या डिसएग्री जाती है तो आपको बनाने हैं सिर्फ 4 पैराग्राफ्स, ओके. और अदरवाइज इफ यू आर सपोर्टिंग विद 70-30 proportion, तो आपको बनाने पड़ेंगे इन टोटल 5 पैराग्राफ्स. ऑलराइट, नाउ दिस थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड or cause and effect with solution. So this third type of question is very easy, okay. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था environmental issues का, so it's very easy in this type of question. आपको सिर्फ main 4 paragraphs ही बनाने हैं, in which there will be 2 main supporting paragraph, जहाँ आपको problem discuss करना है and जो problem आप discuss कर रहे हैं उन्हीं problem को consider में रखते हुए there must be, you have to discuss some of the solutions to solve that problem, okay. उसी तरह से next fourth question, advantages and disadvantages. So in this fourth type of question, in the fourth category of question, you can see and is there. So that means they are asking you both. दोबारा एक example लीजिए. Some people think technology gives numerous benefits. Full stop. Discuss advantages and disadvantages of it along with your opinion. Suppose ये question है आपको. So in this question, you have to discuss both advantages of technology and disadvantages of using technology at the same time. Okay. So यहाँ पर क्या रहेगा basically आपका, you have to write again 4 paragraphs. 4 paragraphs ही बनाएंगे हम दोबारा से. Then after, do the advantages outweigh the disadvantages? It means as जैसे आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखा आपने, वहां पे था डू यू एग्री और डिसएग्री, उसके बाद था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. सिमिलरली यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, तो हमने एक एक पैराग्राफ में दोनों को डिस्कस किया एंड इन टोटल we will write 4 paragraphs. But in this question, do the advantages outweigh the disadvantages? इस type of question में
again you can use 70-30 criteria, or otherwise you can go with a 100%. Outweigh means more, फायदे ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है. So if you think that advantages of using technology is more, so then आप दोनों पैराग्राफ, that means two supporting paragraphs, वहां पर आप लिखेंगे फायदे, and in total 4 paragraphs. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फायदे हैं, there are some disadvantages जो कि आपको लगता है कि बताने जरूरी है, so उसके लिए you can write total 5 paragraphs. Okay. After that, second last type of question, argument based. That means discuss both the views and give your opinion. Suppose कीजिए आपको एक question है, वो कह रहे हैं कि some people think money can buy happiness. Others think there are other factors that can also buy happiness. Discuss both views and give your opinion. Okay, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है. So यहाँ पे आप देख रहे हैं there are two situations where some people are saying that money can be bought with money, happiness can be bought by money. However, other people believe that other factors can also help us to buy happiness. ओके, सो इस तरह से आपको दोनों व्यूज को डिस्कस करके एंड देन बिफोर कंक्लूजन आपने अपना ओपिनियन बताना है. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन you have two options, either you can write 4 paragraphs or 5 paragraphs. Then last, it's mixed spectrum. That means आपको इनमें से combination club होकर question आ सकता है. Maybe they can ask you what are the reasons, and do you think it is a positive development or negative development when it comes, or when it's like they give you a statement like positive or negative development, that means it's about advantages and disadvantages. And if they are asking the reason of something, तो आपको reason बताना है सबसे पहले, और उसके बाद आप बताएंगे कि positive है या negative है. So मिक्स स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स के दो अलग अलग क्वेश्चंस को क्लब करके आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकता है, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इट और हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. सो इस तरीके से आपको दो मिक्स स्पेक्ट्रम के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो अगेन दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, यहाँ कोई डाउट, बिकॉज इसमें आपको यू हैव टू बी वेरी conscious while attempting or while understanding the structure, because as it's your starting day. Okay, so I must tell you कि अगर आप starting में structures के साथ aware हो जाते हो, because most of the students they find it difficult to get aware with the structure of writing. So अगर तो आप writing के structure के साथ aware हो जाते हैं, then आपका काफी हद तक initial point पे जो आपकी एफर्ट्स हैं वो रहेंगी फिर आपकी ग्रामर पे, आपकी वोकैबुलरी पे, आपकी आइडिया जनरेशन पे. बट बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो हम आगे बढ़ते हैं. अब इफ यू हैव नो क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ you can see writing task to structure. Basically I was saying that we have to write 4 paragraphs, and somewhere I said that we need to write 5 paragraphs. So अब देखिए कि paragraphs में कौन-कौन सी चीजें आती हैं in total. So here you can see the writing task to structure. First, कोई भी type of question आए, कोई भी, as we have discussed 6 or 7 type of different type of questions. So कोई भी type of question आ जाए, either agree, disagree, problem solution, advantages, disadvantages, or it can be discuss both views and your opinion, or otherwise make spectrum. हमने introduction जो है and conclusion जो है वो सभी question में रखनी है. Okay, so introduction में क्या चीजें हैं और इसका क्या ध्यान रखना है आपको. What is introduction? Introduction में आएगा क्या basically? The introduction should tell the examiner what the rest of the essay is about.
जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए कि वॉट एवर यू आर राइटिंग इट इज लिंकिंग with the other paragraph. So that means it is about the question. जो क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टली वो उससे लिंक कर रहा है. This tells the examiner that you know what you are doing straight away and help you write a main body paragraphs. Now, straight away लिखने का क्या मतलब है? That means कि आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखिए तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ नहीं होना चाहिए. Like हम जब कुछ भी लिखते हैं, हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, so we start adding more information into it. You have to be more conscious on quality rather than quantity. आपको ये नहीं देखना कि आपको कितना ज्यादा लिखना है, आपको ये देखना है कि आप जो लिख रहे हो वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है. That means convey information point to point. Do not exaggerate at any point of paragraph or any point of, you can say, if you are writing a body paragraph, if you are writing introduction, do not exaggerate. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दीजिए. बिकॉज एन इंट्रोडक्शन आपको करनी है सिर्फ 3 चीजें. ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो 3 चीजें क्या हैं जो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं जिससे कि हम पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकें और एग्जामिनर को ये पता चल सके दैट यू आर डायरेक्टली लिंकिंग योर इंट्रोडक्शन विद द क्वेश्चन. ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. Then the supporting paragraph. Supporting paragraph is basically, as its name suggests, the paragraphs that are connecting or giving the detailed explanation about the question. जो क्वेश्चन के मेन फीचर्स हैं, जो पार्ट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आएगी मेन सपोर्टिंग पैराग्राफ में. दैट मीन्स अ बॉडी पैराग्राफ, जिसे हम आइल्स में बॉडी पैराग्राफ कहते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर. कई बार हम 2 मेन पार्ट की पैराग्राफ लिखते हैं. सपोज इफ यू आर राइटिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डू यू एग्री और डिसएग्री. सो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, सो इन दिस केस यू नीड टू राइट ओनली 2 मेन पैराग्राफ्स. ओके, बोथ शुड बी इन द फेवर ऑफ द क्वेश्चन और वाइस वर्सा. सपोज अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन के साथ आप एग्री जाना चाहते हैं, सो वो जाएगा फेवर में. अदरवाइज इफ यू फील लाइक आपको ऑपोजिट जाना है, सो वो जाएगा डिसएग्रीमेंट. दोनों डिसएग्रीमेंट की तरफ जाएंगे. ओके, आफ्टर बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन. जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है. Here you provide a summary of what you have already said in the rest of the body paragraphs. Basically, कुछ बच्चों के लिए ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है और they get stuck into it कि वो पहले जो चीजें लिख चुके हैं उन्हें दोबारा से वही चीज कंक्लूजन में लिखनी है. So somehow they find it difficult because problem क्या आती है, वो repetition होना शुरू हो जाता है. And in IELTS writing, we are not supposed to repeat anything. We are not supposed to repeat any word or any sentence, any you can say any explanation, any example, nothing. No repetition is there. No repetition should be there. Okay, तो उसके लिए क्या करना है, आपने जो बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा है आपको उन्हीं चीजों को दोबारा से रिपीट करना है, बट विद अ डिफरेंट सेंटेंस. पर उसका लॉजिकल सेंस जो है वो सेम होना चाहिए. ओके, आप कह सकते हैं कि आपको सिर्फ अपना आइडिया जो होगा आपको उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, एंड देन आफ्टर यू कैन गिव अ सजेशन ऑन इट. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू? इसे ध्यान में रखिए. इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ. कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है. अगर तो सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन आ गया टू व्हाट एक्सटेंट, तो वहां आपकी मर्जी है बच्चे. If you have a sufficient points, if you have you are good in time management because you are time bound here in writing. तो अगर आपके पास proper time है, you think or you feel like you can go with the 5 body paragraphs in total, तो आप 3 supporting paragraphs अलग बना सकते हैं, including introduction and conclusion. तो वो पूरा बन जाएगा सेट. आपका जो टास्क है वहां पे फिर कितने पैराग्राफ्स होंगे, 5. ठीक है. उसके बाद आफ्टर स्ट्रक्चर, टिप्स. अब आते हैं टिप्स के ऊपर कि किस तरह से राइटिंग पैराग्राफ्स को मैनेज करोगे एंड क्या टिप्स हो सकते हैं. ओके,
So first of all, you can say the first point, use the question to help you organize your answer. See, अगर आप कभी भी stuck कर जाओ while writing or while planning, just focus on the question. Just use the question. Try to try to find out the logical sense that comes out from the question. उसको समझने की कोशिश करो so that you can organize your answer. That means you can organize the points जो आप आगे describe करने जा रहे हैं. Then the second point, check the journal topic of the question. Journal topic means जैसे मैंने आपको कुछ examples दी थी जैसे पीछे अभी आपको जब हम discuss कर रहे थे question type. So I took some of the examples like technology, environment, happiness and money, like such kind of examples. ठीक है? So अब यहाँ पे आपके question का centralized idea निकालना है. Journal topic means centralized idea of the question. Question का centralized idea क्या है? Question किसके ऊपर based है? If it is based on technology, तो आपने एक common एक बहुत journal सी line technology पर बनानी है. If you feel like your question is based on environment, they are talking or they mention something, some situation that is related or connecting with environment, तो आपने environment के ऊपर एक journal line बनानी है. The journal statement must be common. उसमें कुछ आपने बहुत ज़्यादा like phrase नहीं use करना, dictum नहीं होना चाहिए. Dictum means something that has already written somewhere. Like कुछ कहावतें होती हैं. Idioms and phrases are not allowed in writing now. Okay, earlier it used to be allowed, but अब हम इसे allow नहीं करते हैं. So do not use any phrase. Do not use any idiom. You can use some phrases as expression, but only in speaking, not in writing. Okay, so journal topic on the question, but it is not necessary. अगर आप सही centralized idea crack नहीं कर पाए हैं, if you are somewhere in confusion के right right central idea क्या होगा आपका नहीं पता है आपको, so आप अपनी journal line को skip भी कर सकती हैं. It is not necessary to write a journalized idea first. Then usually a problem of point of the view and with two opposing views. तो ये journal question जो है वो यहाँ से पता चल जाता है कि आपका question के ऊपर क्या focus कर रहे हैं. Then check how many parts there are in the question. ये देखो क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, क्या वो डिस्कस बोथ व्यूज का है या वहां पे एक ही पार्ट है आपको क्वेश्चन में. लाइक कई बार होता है कि आपको स्टेटमेंट में दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं एंड सम टाइम इट मे हैपेंस कि आपको सिर्फ एक ही सिचुएशन दी होगी. तो आपने देखना है कि पार्ट्स कितने हैं क्वेश्चन के, स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स है, कितनी चीजों पे फोकस किया जा रहा है. ओके, एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज make a brief plan. That means planning, it's very important. Focus main points in the question. अब आपने जो भी question है, आपको जो भी situation है, उसके ऊपर you need to plan your task first. Okay, अगर आप अपना task plan नहीं करते हैं, so you will be in problem during your exam. It will affect your time management. Not only time management, it will create a problem for you even while writing also. ठीक है, वो स्टक कर जाएंगे आप ड्यूरिंग योर एग्जाम. तो आपका प्लान होना पहले बहुत जरूरी है. मेक श्योर इफ यू आर राइटिंग, सो आपके पास अगर आप दो पैराग्राफ, इफ यू आर राइटिंग टू मेन बॉडी पैराग्राफ्स, देन एटलीस्ट यू शुड हैव 3 to 4 की पॉइंट्स. वैसे तो ये नेसेसरी है कि आप एक पॉइंट पे ही एक पैराग्राफ में आप एक की पॉइंट भी बता सकते हैं. एक पैराग्राफ में कम से कम एक की पॉइंट और एग्जाम्पल, या फिर अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, आपके पास पॉइंट ज्यादा है, तो आप एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, एक पॉइंट पहले लो, फिर उस पॉइंट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसकी जस्टिफिकेशन दो, फिर जहां पे वो पॉइंट कंप्लीट हो जाता है फुल स्टॉप लगा के हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाना है, सो यू नीड टू यूज कनेक्ट. ठीक है, हमें लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है. फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, व्हाट इज मोर, अपार्ट फ्रॉम इट, इस तरह से. सो आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स एज वेल so that you can use it while writing your task practically. Okay, then next,
Make a very brief note about what you are going to write for each paragraph. As I have already told you, a brief description. Brief means not detailed. It means a short, means in precise. In short, आपका एक plan होना जरूरी है. सिर्फ key points लिखिए, पूरी पूरी line लिखने की जरूरत नहीं है. Okay. नेक्स्ट आइडिया फॉर ईच पैराग्राफ इज इनफ मींस अगर आपके पास एक आइडिया भी है एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक पॉइंट भी है अगर आपके एक पैराग्राफ के लिए सो इट विल बी सफिशिएंट बिकॉज हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 250 वर्ड्स मिनिमम ठीक है बट वो पॉइंट उस पॉइंट की पूरी एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है देयर योर वेटेज इट मैटर्स फाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक पैराग्राफ जो है वो बहुत छोटा है यू राइट ओनली 4 to 5 lines in one paragraph and in the second paragraph you are writing 7 to 8 lines so that means आपकी वेटेज अगर इक्वल नहीं है बॉडी पैराग्राफ में वेटेज अगर इक्वल नहीं है तो उससे इफेक्ट जरूर पड़ेगा सो फॉर दैट आप ध्यान रखिए कि आपका जो एम होना चाहिए लिखने का दैट मस्ट बी अराउंड 260 words 250 is the minimum requirement but your aim should be more than 250 like it can be around 260 to 280 or above 280 ठीक है बट डू नॉट एग्जैजरेट ऐसा ना हो कि आप एक्सेस लिखने के चक्कर में अपना एम अपने वर्ड्स को पूरा करने के एम के चक्कर में आप उसको एग्जैजरेट करते जाए वर्कआउट हाउ मेनी लाइन्स अब ये 250 और 260 के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप करेंगे कैसे क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं आप वर्कआउट हाउ मेनी लाइन्स 250 वर्ड्स आर इन कितने टोटल लाइन्स में आपके 250 वर्ड कवर होते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू कैन राइट 10 वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड्स लिख सकती हैं सो दैट मीन्स यू नीड टू प्रोड्यूस यू नीड टू क्रिएट एटलीस्ट 250 लाइन 25 लाइन जहाँ पे आप 250 वर्ड्स को पूरा कर सको फाइन ये हमने एक एवरेज कंसिडर किया है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं मे बी अगर आप 8 या 7 वर्ड्स लिख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको टोटल लाइन्स लिखनी पड़ेंगी ठीक है या अगर आप पूरे 10 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आपको उस हिसाब से फिर 25 लाइन्स इन टोटल लिखने पड़ेगा इंक्लूडिंग बॉडी पैराग्राफ्स एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन spend no more than 5 minutes analyzing the question and planning. So now it is very important. मैं यहाँ पे आपको एक power concept बताना चाहूँगी because we are talking about planning and analyzing the question. So it is very important to understand the power concept. Now what is a power concept? Here the word P, the first word P, it stands for planning. So without planning, your task is nothing. You cannot be able to write a good and impressive writing task too without planning. तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बट प्लानिंग के लिए पूरा प्लानिंग में क्या क्या चीजें आएंगी कीवर्ड्स को प्लान करना सिंक्रोनाइज में रखना आप देखना कि कौन सा पॉइंट आप कब लिखेंगे कैसे लिखेंगे एवरीथिंग कम्स अंडर इट सो आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट जो आपने की पॉइंट्स बनाए हैं जो आपने की पॉइंट्स लिखे थे आइडियाज जनरेट करे थे जब आपने तो वहां पे सपोज आपने 5 to 6 की पॉइंट जो है वो जॉट डाउन कर बट अब उसको ऑर्गेनाइज भी करना है इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं आप उसको लिख कैसे रहे हैं किस तरीके से आपने मैनेज किया है उन पॉइंट्स को after that after the word O that stands for organizing the next word W it stands for your handwriting your writing as इसके marks नहीं होते हैं but still it is important because some students they put more focus or they give more emphasis on their cursive handwriting वो cursive लिखने के चक्कर में बहुत बार ऐसे words वो लिख जाते हैं that वो understandable नहीं होता है examiner को so make sure your words your spelling it must be in a structure your handwriting your paper must be neat and clean okay आपको उसको messy नहीं बनाना है so it can add a good impression in front of your examiner whosoever is going to check your exam ठीक है so okay after the writing जो दूसरी चीज important है that is evaluate कैसे कर रहे हो आप अपने
टास्क। आप अपनी राइटिंग में जो पॉइंट्स लिखे हैं, आपने उसमें कितना ज़्यादा लिंक बनाया है, आप उसको किस तरीके से सही तरह से मैनेज करने में एबल। एंड उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज रिवाइजिंग। Revising, it's very important क्योंकि it's very obvious, like whenever we write something in a flow handwriting, so errors का निकलना, silly mistake का होना वो बहुत common है। वो फिर आप कहीं पे एस या ई एस की गलती कर रहे हैं, इट मे बी योर स्पेलिंग एरर्स, इट मे बी आप कोई वर्ड स्किप कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं कैपिटलाइजेशन रॉन्ग कैपिटलाइजेशन की है, या कैपिटलाइजेशन एक्सेस की है आपने, या फिर आपने कहीं पंक्चुएशंस का ध्यान नहीं रखा, लाइक कमाल नहीं लगाए हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाया है आपने। सो ये सारी चीजें आपको हेल्प करता है रिवाइज करने के लिए। इन टोटल यू हैव 1 hour टू कंप्लीट योर टास्क 1 एंड टास्क 2। 1 घंटा मिलता है आपको टास्क 1 टास्क 2 कंप्लीट करने के लिए। सो उस 1 घंटे में ये जरूरी है कि अगर आप 40 मिनट्स उसमें से 1 hour में से दे गिव यू 40 मिनट्स टू कंप्लीट योर टास्क 2 and 20 minutes to complete your task 1. So जो 40 मिनट्स का टाइम जो आपको मिल रहा है, उस 40 मिनट्स में से 5 मिनट्स आपने लेने हैं प्लानिंग के लिए, 30 मिनट्स लेने हैं आपने राइटिंग के लिए, एंड लास्ट 5 मिनट्स आपकी होनी चाहिए फॉर रिवाइजिंग। रिवाइजिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, these are the technique, these are the tips. Any questions, Sarveen? Okay, I'm saying you are time bound in writing. They give you only 1 hour to complete your task 1 and task 2. Okay, दोनों के लिए 1 घंटा ही मिलता है। So out of that 1 hour, they give you 40 minutes for writing task 2 and 20 minutes for task 1. तो वो जो 40 मिनट्स मिले हैं आपको, उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, 40 मिनट्स में कैसे हम कंप्लीट करेंगे? 20 मिनट्स में आपका टास्क 1 इजीली कंप्लीट हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट टास्क 1 इन 20 मिनट्स। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे कैन कंप्लीट इन 50 मिनट्स ओनली, एंड देन आफ्टर दे कैन यूटिलाइज 5 मिनट्स फॉर रिवाइजिंग एज। आपको क्या चीज करनी है राइटिंग टास्क 2 में? बिकॉज राइटिंग टास्क 2 में कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हमारे पास टाइम शॉर्टेज हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है 40 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करेंगे। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, डू नॉट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग। 5 मिनट से ज्यादा प्लानिंग के लिए मत दें। ओके, 30 minutes for writing only, because if you have already write or if you already plan your task, आपको सिर्फ 4 या 5 paragraphs बनानी है। So it is not impossible to complete 4 or 5 paragraphs in 30 minutes. आप आसानी से आधे घंटे में 4 paragraphs या 5 paragraphs बना सकते हैं, because your plan is ready. Your key points are in an organizing way. You know what will be the examples that you are going to add with the explanation, तो वो easy रहता है फिर आपके लिए लिखने में। Once you have planned it with 5 minutes, then आपने आधा घंटा ले लिया लिखने के लिए, तो still you left with 5 minutes. तो वो जो लास्ट के 5 minutes हैं, आप उसको रिवाइज करने के लिए जरूर दें। कभी भी लास्ट मोमेंट तक आप लिखते ना रहें। ओके, डू नॉट राइट टिल द लास्ट मिनट, बिकॉज अगर आप लास्ट मिनट तक लिखते रह जाएंगे, you will left with no extra time, because your invigilators, your examiners, they will not allow you to use a single minute or a second after completion of 1 hour. Okay, so time management, it's very important in writing. As now you are taking online classes, so whenever you write your task, make sure use timer. Okay, and spend only 40 minutes while writing task 2 and 20 minutes while writing task 1. Now, हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप द इंट्रोडक्शन शॉर्ट। एक चीज है यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपकी इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ से छोटी होनी चाहिए, एंड कंक्लूजन बॉडी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दोनों से छोटी। सो मेनली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट योर इंट्रोडक्शन, कीप इट प्रिसाइज. Do not write many things.
just write 2 to 3 sentences in which उन 2 to 3 sentences में अब क्या आएगा वो हम आगे बात करेंगे. दैट मीन्स अबाउट 30 words. अराउंड about 30 words है. Okay, fine, you can consider it 35 to 40 words also. ठीक है. अब इन 4 sentences, 2 to 3 sentences में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले connect your introduction and title. That means journal line, जो मैंने अभी बताया. Journal line, centralized key point बताना, but it is not necessary. Okay. बट स्टिल इफ यू आर नॉट राइटिंग इट, अगर आप जर्नल स्टेटमेंट नहीं भी लिख रहे हैं तो भी आप अपने टास्क को स्टार्ट कर सकते हो इस पॉइंट से, 4th पॉइंट से. इफ यू आर नॉट राइटिंग अ जर्नल स्टेटमेंट, दैट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद इट. Write a sentence which contains a part of the question you are asked about. Suppose जो भी क्वेश्चन में आपको पार्ट्स दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा है, आपने उसे पैराफ्रेज करना है. ओके. Like you can see where you can use synonym to rephrase the question. If you are not giving a journal line, if you are not adding a journal statement in introduction, you can directly start with it and you can give a rephrase of statement. It is very important. जो situation है, जो भी सिचुएशन आपको दी है, आपको सेम एज इट इज उसी सिचुएशन को पैराफ्रेज करना है. दैट मीन्स पैराफ्रेजिंग क्या चीज होती है? चेंज द सेंटेंस फॉर्मेशन without changing its meaning. That means without halting its meaning. आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन बदलनी है, उसका लॉजिकल मीनिंग नहीं बदलना. Alright, that is what we call paraphrasing the question. Paraphrasing आप कैसे कर सकते हैं? You can paraphrase it by using synonyms. Okay. Then remember that quality is better than quantity. मैंने ऑलरेडी बताया. इंट्रोडक्शन में आपने बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी. आप इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेनेशन मत दें. इंट्रोडक्शन में ही आप की पॉइंट्स या बेनिफिट्स ना बताएं. जितनी भी एक्सप्लेनेशन रहेगी वो सारी सपोर्टिंग पैराग्राफ में आएगी. डू नॉट पैनिक इफ अदर पीपल आर राइटिंग मोर देन यू. सी एग्जाम में or while performing or somehow you are giving your mock test in academies, तो आपको उससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है that others are writing more than you. It never matters कि आपने कितना लिखा है. Definitely minimum requirement is, it is important to fulfill the minimum requirement, but still उस minimum requirement के साथ a good quality must be there in terms of vocabulary, in terms of sentence formation, in terms of ideas and examples too. Okay. This is about introduction. I hope it is clear to you, Saveen. फिर उसके बाद आता है how to write a supporting paragraph. So now we have done with introduction. फिर introduction के बाद आपको एक line छोड़नी है. Just leave a line in between paragraph and introduction. So उस supporting paragraph में अब क्या चीज आएगी? Write in stages. Like if you are writing 2 paragraphs, तो आपके पास 4 key points है, तो आप दो को bifurcate कर लीजिए. 2 key points in BP1, that means first body paragraph, and next 2 key points in second paragraph. Then to connect the paragraph to the introduction, अब हमने क्या करना है? Connection होना बहुत जरूरी है. From introduction up till conclusion, there must be a connection between everything. सब कुछ link में होना चाहिए so that you can get good scores. Because connecting का आपके मार्किंग के साथ एक बहुत बहुत ज्यादा important connection है. Okay, that we will discuss on some other day, जब मैं आपको बताऊंगी कि मार्किंग कैसे होती है. So but make sure आपके इंट्रोडक्शन को पैराग्राफ से कनेक्ट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लाइक हम जिसको कहते हैं कमेंसिंग स्टेटमेंट देना. फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, सो यू आर गोइंग टू राइट अ रीजन, like what are the reason why environment is getting affected day by day. So वहां पे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? To begin with, the main cause and factor affecting environment is. So this can be your starting statement. तो इस तरह से आपने क्या किया? You connected your first body paragraph with introduction. Okay. Alternatively, you can just state the cause or begin the explanation of the situation. और अगर आप चाहें तो आप सीधा to begin with आप सीधा explanation दे सकती हैं, सीधा key point के ऊपर आ सकती हैं. For example, to begin with, deforestation is the first and the foremost factor that is
affecting or that is vulnerably affecting environment. So इस तरीके से आप directly explanation को भी start कर सकते हो. If you do not want to use these words, it completely depends on your preference कि आप कौन सा word use करो. Okay. Then as a rough guide, अब हमने जैसे introduction में देखा था we can use approximately 30 to 35 words and we need to keep it precise. Similarly, जब आता है body paragraph, so इसकी length जो है वो बड़ी होनी चाहिए. यहाँ पे आपको कम से कम 7 to 8 लाइन्स आप अपना माइंडसेट लेके चलिए कि आपको कम से कम 80 वर्ड्स उस पैराग्राफ में ऐड करने हैं. ठीक है, दैट मीन्स 7 to 8 लाइन्स. लाइक वही आपका दोबारा से स्ट्रैटेजी रहेगा. इफ यू आर एबल टू राइट 10 वर्ड्स इन अ लाइन, तो उस हिसाब से आप 8 लाइन्स में आप 80 वर्ड्स को पूरा कर सकते हैं. Then after, mark on this answer sheet and write towards the mark. Repeat this for the subsequent paragraph. Similarly, जैसे आप एक फर्स्ट पैराग्राफ में 80 वर्ड्स लिखे, अप्रोक्सीमेटली आपने 80 वर्ड्स लिखे हैं, उसी तरह से आपको दूसरे पैराग्राफ में भी 7 to 8 लाइन्स और 6 to 7 लाइन्स तक का होना जरूरी है. इट शोज द वेटेज ऑफ योर पैराग्राफ. वेटेज जो है मेन पैराग्राफ्स की वो इक्वल होनी चाहिए. ओके, ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ बहुत छोटा है, एक पैराग्राफ बहुत लेंथी है एंड दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें स्टफ आपने बहुत कम लिखा है. ओके, ऐसा अगर होता है सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर टास्क. वो देखकर पता चल जाएगा कि आपने ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन यू आर नॉट एबल टू राइट इट कंप्लीटली. ओके, एंड देन लास्ट, एज यू राइट यूज अ पेंसिल. मेक श्योर in your IELTS exam you are not supposed to use pen. Okay, आपको पेंसिल का यूज करना है, but do not try to rub or correct it again and again. बार बार उसको erase करने का वो मत कीजिए, because it wastes a lot of time and secondly it makes your sheet more messy. आपका पेपर जो है वो ज्यादा tidy और messy लगेगा. So don't do that. Now, last, how to conclusion. अब conclusion कैसे लिखना है? अब हमने अपनी स्ट्रक्चर को कैसे समझा. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन. कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में हम 3 चीजें बताएंगे. बच्चे, आई एम रिपीटिंग इट. जर्नल लाइन. इफ यू आर नॉट क्लियर विद द सेंट्रलाइज्ड आइडिया तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं. आफ्टर दैट, अगर आपने लीव छोड़ दिया जर्नल लाइन को तो आप पैराफ्रेज करेंगे और उसके बाद आप देंगे अपना आंसर, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन, वो आप बताएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा बॉडी पैराग्राफ. करेंगे, कंप्लीटली डिपेंड्स. सिचुएशन चेंज होती है, टास्क चेंज होता है तो की पॉइंट्स भी बदल जाते हैं. ओके, फिर आफ्टर द 2 बॉडी पैराग्राफ्स और 3 बॉडी पैराग्राफ, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कितने पैराग्राफ लिख रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से. एंड एट द एंड कंक्लूजन. अब कंक्लूजन में क्या चीज जरूरी है. राइट अ लॉजिकल कंक्लूजन, रीस्टेट योर ओपिनियन. इफ यू वांट टू राइट अ गुड लॉजिकल कंक्लूजन, सबसे पहले अपना ओपिनियन जो है उसको रिपीट कीजिए. सपोज इंट्रोडक्शन की थीसिस होती है आंसर टू द क्वेश्चन. थीसिस में आपने लिखा आई एम एग्री टू दिस स्टेटमेंट, I shall discuss my argument in further paragraphs. Okay, ये था आपका आंसर. Now, अब आप कंक्लूजन लिखने लगे हैं तो आपने अपनी ओपिनियन को ही एक बार दोबारा से रिपीट करना है, बट सेंटेंस चेंज कर दो. तो आप कैसे लिखेंगे. इन कंक्लूजन, कमा, there is no denying fact that advantages of using technology are more. तो आपका ओपिनियन भी यही था कि यस एडवांटेजेस आर मोर. सो हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी वेरिएशन ऐड कर दी. एंड देन गिव अ रेलेवेंट सजेशन इन रिस्पेक्ट टू द टॉपिक. आपका जो सजेशन है वो टॉपिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. सपोज द क्वेश्चन इज अबाउट एडवांटेजेस एंड एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ हैविंग टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट. सो आपने कहा कि बेनिफिट्स आर मोर. सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे. आपने सेंटेंस बोला, there is no doubt that use of technology gives more benefit to an individual, but excess use of it can harm us, so we should use it in a limited way. So last line क्या थी, आप suggestion कि excess किसी चीज का यूज करना जो है वो harmful हो सकता है, तो हमें इसे limited way में ही यूज करना चाहिए. Okay?
I hope you're clear with the structure. Okay. Any doubt, any confusion? Okay, fine. अभी आप देखिए, there is a task, IELTS writing task topic है एक आपके स्क्रीन पे. हम पहले ही मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या है, so that you can perform it. Okay, हम इसको थोड़ा सा in brief discuss करते हैं. The question is, some people believe that international trade and communication with other countries is a positive trend. Comma. Okay, so that means ये थी आपकी एक सिचुएशन. अब हमने पार्ट्स देखने हैं कितने हैं. ओके, उन्होंने कहा था ऊपर इंट्रोडक्शन में चेक कर लीजिए कि पार्ट्स कितने होंगे, सो दैट यू कैन इजीली मैनेज इट. सबसे पहले, some people believe that international trade means global trading and communication. आप इस तरह से भी लिख सकते हो उसको. ठीक है, if you're not aware like how to change the word trade, or you can say international import and export, ऐसे भी बता सकते हो हम. that means trading, international or global import and export and communication with different countries. other countries था तो हमने इसको different countries कर दिया. अब ये क्या है, what we are doing, this is the paraphrasing. इसे हम कहते हैं rephrase करना. ओके, पहला था वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और कम्युनिकेशन दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है. ट्रेंड मीन्स प्रैक्टिस है, फिनोमिना है. वाइल कमा कंपैरिजन के लिए वाइल यूज होता है जबकि, इसका मतलब है जबकि. अदर्स थिंक इट इज हार्मफुल टू नेशंस, ये दूसरी कंट्रीज के लिए हार्मफुल है. बाकी ऐसा मानते हैं कि ये कंट्रीज के लिए हार्मफुल है. and they might lose their identities. इसकी वजह से इंक्रीज जो हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, कम्युनिकेशन में, उसकी वजह से एक कंट्री जो है वो अपना इंडिविजुअलिज्म, अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो सकती है. एंड दे मे लॉस देयर आइडेंटिटी, यूनिकनेस जो है वो लॉस्ट हो सकती है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं. फुल स्टॉप. तो यहाँ जो फुल स्टॉप आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपने करना है इसको रिफ्रेस. ओके, दिस इज द सिचुएशन. बेसिकली मैं इसे हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको. दिस पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज द सिचुएशन ओनली. ओके, हमने इस सिचुएशन के साथ, हमने इस सिचुएशन को माइंड में रखना है कि हम अपने आने वाले पैराग्राफ में क्या बताएंगे. सो हमने अपने इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स वी शैल डिस्कस आइदर एग्रीमेंट, यू कैन से यस इंटरनेशनल. आपका अपना ओपिनियन है तो इट डज नॉट मैटर कि मैं आपको क्या सजेस्ट कर रही हूँ. इट डिपेंड्स what is your opinion, it depends how many points you have. but जब ऐसा टॉपिक आता है तो आपने दोनों के ही प्लान कर लेने हैं. आपने देखने हैं कि किस किस पॉइंट्स आपके वैलिड बन रहे हैं. ओके, सो हम इसके भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. एंड to what extent do you agree and disagree with this statement? तो जो सेकंड आप देख रहे हो आफ्टर फुल स्टॉप, this is the question. To what extent do you agree or disagree? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट आया, हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक किया कि we have two options. We can support this particular task by using two different methods. The first is you can support your answer with one-sided view. You can say I am totally agree with it और totally disagree किसके साथ या agree किसके साथ, तो ये भी मेंशन करना है. आप कह सकते हैं I agree to this या I agree to the former statement. former statement मतलब पहली वाली statement, या former लिखना अगर confusion लगता है तो आप ऐसे बोल दो I agree with the initial statement. initial means first statement. या फिर अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हो तो आप कह दो I agree with the later half of the statement. later half कौन सी होगी, सेकंड, जहां कह रहे हैं कि नुकसान हो सकता है. ठीक है, सर्विंग क्लियर है इतना. तो इट डिपेंड्स कि आपका एग्री जा रहे हो या आप डिसएग्री जा रहे हो. अगर आप एग्री जा रहे हो दैट मींस आप कह सकते हैं आई एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट. अगर आप एग्री जा रहे हो सेकंड वाले के साथ तो आप कह दो आई एग्री विद द सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है,
आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले अगर आप एग्री है, अगर आप कह रहे हो कि आप अपना मुझे अपना पहले पॉइंट बताइए, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसके बाद हम उसे डिस्कस करते हैं। Okay, okay. That means you are saying definitely you are more inclined towards the first half of the statement. That means you are saying advantages or the benefits of having an international trade and communication is more. Okay, but at the same time there are certain drawbacks that you will discuss in the following paragraphs. Okay, that means आप है 70-30, you are more inclined towards the first half of the statement. Okay, but certain disadvantages are there. ठीक है, ओके। अब फर्स्ट पॉइंट इन द, अब आपको बना रही है 3 पैराग्राफ्स बिकॉज यू आर सेइंग कि आपको 70-30 जाना है। तो यहाँ कैसे होगा, सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट क्या मिलता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, फाइन, बिकॉज व्हेन a country start dealing in international trade and communication with the other countries, it okay, प्रोडक्ट से पहले हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि ज्यादा वेटेज, जिनकी वैल्यू ज्यादा है। इट इज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स अ कंट्री टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का होना, इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो जरूरी है दूसरी कंट्रीज के साथ है। ओके, इससे कंट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है, जिससे कि कंट्री के डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस इट हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, क्लियर टू यू? देन अब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया इन द फर्स्ट पैराग्राफ। देन इन द सेकंड पैराग्राफ वी कैन टॉक अबाउट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। Okay, due to international trade and global trade practices, you can say the most of the international investors deal in other part of the countries. It help the local people to get job, उन्हें job मिलती है, employment opportunities बढ़ जाती हैं, and at the same time local people can enjoy the facilities of having numerous availability of product in the market. You can take an example of kiwi fruit that is not available and that is not cultivated in India. Okay, वो कहाँ से आता है, वो आता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आता है बाहर से, बाहर की कंट्री से। मेनली न्यूजीलैंड इज द एक्सपोर्टर ऑफ इट। ओके, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसको इंपोर्ट करवाते हैं हम बाहर से। देन दिस इज अबाउट द 2 पैराग्राफ्स। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम क्या बताएंगे कि कैसे लॉस होती है कल्चरल आइडेंटिटी। यू कैन से इसकी वजह से जो लोकल बिजनेसेस हैं उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, बिकॉज नाउअडेज पीपल स्टार्ट गिविंग मोर प्रेफरेंस टुवर्ड्स फॉरेन ब्रांड्स। वो दूसरे ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द नेशनल मार्केट। तो इसका मेजर इफेक्ट कहाँ पर जाता है, जो लोकल और जो नेशनल मार्केट है, जो लोकल मैन्युफैक्चर है, they face losses and they suffer with the economical loss because they can't compete with the international traders. Moreover, it is a major cause in loss of natural and you can say the cultural identity. कंट्रीज आर स्टार्ट लुकिंग सेम। सारी कंट्रीज जो है उनकी जो यूनिकनेस जो है, जो आइडेंटिटीज है, जो इंडिविजुअलिज्म है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है। एवरी स्टार्ट लुकिंग सेम। कंट्रीज का जो पैटर्न है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो लिविंग स्टेटस है, वो सेम लगना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ओके, पॉइंट्स आर क्लियर टू यू? एनी डाउट इन इट? Okay,
So these are the major key points that we have discussed. Two body paragraphs in favor of international trade and communication with other countries. However, third body paragraph against it. Okay? And then conclusion must be there. So I hope राइटिंग पार्ट 2 इज क्लियर. आपको हमने जो अभी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था वो है डू यू एग्री और डिसएग्री. सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना. ठीक है.